नमस्कार, रसोई के रहस्य के फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है. We've been on a bit of a break and we're now back with the season of festivals in India. To get this part going, we are going to begin with a very, very beautiful festival. A festival of lots of devotion, sacrifice, and lots of food. Yes, I'm talking about the festival of Eid-Ul-Adha, which is also popularly known as Bakri. Celebrated across the globe by the Muslim community, there are many celebrations held in every home in different ways. So let's not waste any more time and get to meet our guest today, who's very special. I have with me Sadaf Rizvi from Delhi. She is going to share with us her story of this particular festival. Sadaf is somebody who's extremely experienced in the world of production and direction in the television space. I'm going to say no more, but let Sadaf introduce herself to me, and I'm delighted that someone like her is here to share her story with us. Welcome to my show, Sadaf. It's a pleasure to have you here. Hello, Payal. Adab, Assalamu alaikum, and a very, very happy Eid to everyone. It's basically, we wish Eid Mubarak, because that is the way how we kind of, start the festivities by starting our day with Eid Mubarak, which is like आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो. Have a very, very beautiful Eid. Yes. So yes, Eid Mubarak to everyone. My name is Sadaf and I'm based out of Noida, to be precisely clear. And basically, talking about my background, I'm from Lucknow, जो शहर तहजीब है. तो हमारे यहाँ हर चीज में एक बहुत ही फिनेस होती है जब हम कोई बात करते हैं. यहाँ तक कि कहा जाता है कि जब हम लखनऊ वाले स्पेशली अगर झगड़ा भी करते हैं तो वो इतनी खूबसूरती से होता है कि वो झगड़ा इतना मीठा हो जाता है कि कोई झगड़े की बात ही नहीं रहती है. So I'm from that land of Nawabs or the land of Tehzeeb. So yes, Eid for us is a festival where it's something, basically कहा जाए तो मुस्लिम्स की अगर आप कम्युनिटी की बात करिए तो हमारे यहाँ दो मेजर ईद ही होती हैं, अगर फेस्टिवल्स की बात करिए तो. So primarily, Eid is something which is, the time when we celebrate our, communities, happiness and the festivities. Of course, there is a, reason behind the festival. चाहे वो ईद फित्र की बात करें जो कि ईद होती है, मीठी ईद भी जिसको कहते हैं, या ईद उल अधा की बात करें जो कि बेसिकली बकरी ईद होती है. नाउ देयर इज अ हिस्ट्री बिहाइंड बोथ. लेकिन जैसे कि आपने मुझसे कहा कि आपने मुझे इतनी खूबसूरती से इंट्रोड्यूस करा, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी a little bit more about me before we go and discuss more about the festival. Is that yes, thank you so much. मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से हूँ. And I've had an amazing time, because this is something which I love to do. This was my passion and I pursued it. मैंने बहुत सारे international और national television programs direct किए हैं, और अब मेरा एक production house है यहाँ Delhi based है, and we do production for a lot of OTT platforms, ad films, etc., etc. Right. So that is another chapter. But yes, personally, I am a very, rooted person, and I believe in celebrating life in general. And definitely, festivals are a cherry on the cake. Yes, absolutely. Absolutely. And that's what it's all about. Ultimately, at the end of the day, we can be doing anything, but to be able to pursue your passion and actually enjoy what you're doing and, in a people's industry, I think there's nothing more rewarding than that. Absolutely. So tell me, so Eid-Ul-Adha now, we used to know this, I live in Hyderabad, so with a very vibrant community and having grown up amongst a lot of Muslim friends, Bakri was always something that, we heard of. It's now expanded and we hear of it as Eid-Ul-Adha. The very word Adha means to be giving something, to be offering something. Tell us more about what this festival is all about. I mean, what is the history behind the festival? Right. So it's actually Eid-Ul-Adha
Adha. It's Adha is the, of course, how we write in English. But if you talk about the Urdu version of it, it is Eid-Ul-Adha. And Okay. of course, as you said, it's the festival of sacrifice. So if you talk about what exactly happened, was that one of our prophets, Hazrat Ismail, उनको ख्वाब आया था कि वो कल सुबह जा करके अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी देंगे अल्लाह के नाम पे. Okay, so that is the type of, that is the dream that he had. So उनके obviously ये जो पैगंबर होते हैं या जो prophets होते हैं, there is no उनके दिमाग में कभी सेकंड थॉट्स नहीं आते. अल्लाह ने जो कहा या जो वो उनको सर्मन हुई, वो उसको बिना उसके बिल्कुल ब्लाइंड फेथ की तरह फॉलो करा उन्होंने. और वो अगली सुबह उठे और उन्होंने अपने बेटे को उठाया एंड देन ही वेंट ऑन अ हिल टॉप और वहां पर उन्होंने ही सेड कि अल्लाह मैं आपके हुक्म पर अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए आई एम रेडी. ओके, सो व्हाट हैपेंड वाज दैट द मोमेंट जैसे इस्माइल को इब्राहिम को ये हुई थी कि इस्माइल की वो कुर्बानी दें, तो उन्होंने व्हेन ही वाज जस्ट उन्होंने कहा अपने बेटे से कि आंख बंद कर लो और मैं भी अपनी आंख बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये देख नहीं सकता. ऑब्वियसली बेटा है. हाउ कैन किसी भी फादर के इमोशन किसी इमोशन आप समझ सकते हो, लेकिन ओबीडियंस, एक्ट ऑफ ओबीडियंस टू अल्लाह's कमांड was his calling. So before Abraham could actually sacrifice his son, Allah provided him with a lamb which he was supposed to kill in his son's place because of his willingness to sacrifice his own son in the name of God. Now अब आप समझिए जैसे ही उन्होंने कुर्बानी शुरू करी, बजाय इस्माइल के वहां पर एक दुम्बा जिसको कहते हैं कि शीप लैम्ब, वो वहां पे उसकी जगह आ गया और कुर्बानी हो गई. और जब उन्होंने आंखें खोली तो हजरत इस्माइल जो बेटे थे वो वहां पे खड़े हुए थे एंड उन्होंने कुर्बानी लैम्ब की दे दी थी. तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हुआ इस बात से कि तुमने बिना किसी उसके एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज कमांडिंग ओवर दिस थिंग, और तुम्हारा इतना फेथ स्ट्रॉन्ग है कि ये मैं तुम्हें सिर्फ एक टेस्ट कर रहा था, क्योंकि रिलीजन इज ऑल अबाउट टेस्टिंग योर सेल्फ एंड योर who you are, और आपको कितना ज्यादा फेथ है उस पर्टिकुलर चीज पे. एंड दैट इज व्हाई ये हिस्ट्री है बेसिकली कि बकरीद क्यों इसी का सेलिब्रेशन होता है. एंड वी एक्चुअली सेलिब्रेट द विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस. नाउ यहाँ पे तो फिजिकल एस्पेक्ट आपने देखा, लेकिन what is behind this whole story is that sacrifice all your vices, sacrifice all your bad deeds. When God says that don't do this, don't do that, it's as simple as that. And in replace of that you will get a gift. That also God said. ऐसा नहीं था कि सिर्फ बचा लेता इस्माइल को और कुछ ना होता. No, in place of that he replaced it with a lamb which was a gift. So today, if you will sacrifice your bad deeds, you will get a gift also in return, and that is his promise. Absolutely. So basically, it's more at a deeper level, like you said so rightly, that the physical aspect is just one thing. It's, I think, more for people, the ordinary mortal, to be able to understand. It's like an example, but behind that, the deeper meaning is absolutely beautiful, and it's so important for all of us to understand that unquestioned and unconditional faith definitely takes its place. So tell me, Sadaf, aapke ghar mein, like you said, you're from Lucknow, the beautiful land of tehzeeb and fabulous food. So aap log ke ghar mein, growing up, what was the day's routine at your home? Right. So जैसा कि it happens कि आप जब इस small town तो मैं नहीं कहूँगी लखनऊ को, लेकिन वहाँ पे obviously lifestyle and living conditions are totally different from cities like Delhi, where everything is very much limited in terms of nuclear families हैं, in terms of crunch of space है. So in Lucknow we have a big space where it's a big house where we live, and there is a small area outside like a
garden, which is especially for जब हमें घर में दावतें होती थी तो वहां पर cooks वहीं पे खाना पकाते थे. Everything is totally different. It was not a time of fast food and quick 2-minute noodles. Yes. So हमारे घर में ये होता था कि बचपन में my father was a general physician. He was a doctor by profession, and my mother also she was into academics. So घर में totally उस तरह का पढ़ाई का माहौल एंड ये सब था. अच्छा, वहाँ पे लखनऊ में ना बाजार हुआ करते थे. जैसे कि इन टाइम्स ऑफ ईद उल फित्र वो जो पुराना लखनऊ है जहाँ पे चौक हुआ करता है, वहाँ पर 2-3 दिन पहले से ही आपको पूरा माहौल मिल जाएगा. यू विल गेट टू you would know that okay, Eid is coming, Eid is approaching, and सिवाई मिलना शुरू हो जाएगी, कपड़े मिलना शुरू हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बकरीद में क्या होता था, देयर वाज अ मार्केट वेयर और बकरीद की तैयारियां शुरू हो जाती थी. फॉर एग्जाम्पल एक गोट मार्केट लग जाती थी जहाँ पर आप जा करके यू कैन परचेज द गोट फॉर द सैक्रिफाइस एंड ऑल. तो बेसिकली क्या है, आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों आप गोट को अपने घर में लेकर आते हो और उसको फिर कुर्बानी उसकी देते हो. यहाँ पर आप जाइए उस स्टोरी पर जहाँ पे हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की सैक्रिफाइस दी थी. तो उनके बेटे थे, ठीक है, अब उनको ऑब्वियसली उनसे अटैचमेंट था. तो कहने का मतलब है जब हम गोट लेकर आते हैं अपने घर में तो उसमें ये लिखा हुआ है किताबों में कि आप उससे इतना अटैच हो जाइए, इतना अटैच हो जाइए उन 2 दिनों में. उसको खिलाइए पिलाइए, उसकी पूरी केयर करिए, जस्ट लाइक एज इफ वो आपके घर का एक हिस्सा हो. एंड देन व्हेन यू डू द कुर्बानी ऑन बकरीद, इट विल जस्ट टेक यू बैक इन टाइम एंड रिलेट टू द इमोशनल लेवल विद व्हिच हजरत इब्राहिम हैड gone through doing the sacrifice of Hazrat Ismail. So basically वो इमोशन आपके अंदर वो करने के लिए यू बाय द गोट एंड 2 दिन के लिए आप उसको पूरा वो करते हैं. तो वो उस मार्केट से हम लोग जाकर वी यूज्ड टू परचेज द गोट. एंड अच्छा, गोट में ये होना चाहिए, उसमें भी कंडीशंस हैं. आई एम गिविंग अ वेरी कंप्लीट आइडिया कि वो बहुत जैसे ही शुड नॉट बी सिक, ही शुड नॉट बी प्रेग्नेंट, he should not very old, he should not be very young. So ये सब aspects हैं. And वो क्या होता है, through that denture of the goat you can understand कि उसकी age क्या है. Because ये बहुत ही intricate चीजें हैं, and so that you are not fooled by that person. So वो हम जो उसके वो होते हैं, अभी बड़े बुजुर्गों में ज्यादा समझ थी. Of course we don't know anything much more about it. So वो आ जाता था. उसके बाद हमारे घर में आंगन था, वहाँ पर हम लोग उसको रखते थे. और इट वॉज सच अ अमेजिंग थिंग टू हैव अ गोट इन द हाउस. एक सिटी में आप रह रहे हो, आप एकदम बिल्कुल पॉश एरिया में रह रहे हो, एंड सडनली ये होता था. तो एक हम लोग बचपन में उसको एक इट वॉज लाइक वो हमारी फेस्टिवल वहीं शुरू हो जाता था. फिर वो चने की दाल आती थी और वो बड़े बड़े पत्ते आते थे, हम लोग उसको फीड करते थे. और वो रात में अपना जैसे लगता था ना, वो उसका घर वो खुद समझ होती कि व्हाट आर दे. तो क्या होता था, फिर उसके बाद ये हुआ. उसके बाद 3rd डे पे ऐसे ही वी यूज्ड टू कॉल द पर्सन हु वाज गोइंग टू गिव द सैक्रिफाइस, बिकॉज वो प्रोफेशनल्स होते हैं. फिर उसके बाद जब कुर्बानी होती थी, उसके पहले जो जैसे बड़े होते थे घर के, गोट के कान में एक दुआ पढ़ी जाती है. क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ वैसे भी जब हम मतलब सैक्रिफाइस इस तरह की स्लॉटरिंग करते हैं तो हलाल और हराम की चीज होती है. तो वो जब होता है, बेसिकली हाउ द सैक्रिफाइस इज कंडक्टेड इज ऑल्सो इन अ वेरी वेरी रिलीजियस वे. इट इज नॉट लाइक कि हम उसको उसको वो कर रहे हैं, जस्ट किल कर रहे हैं. वी आर सैक्रिफाइसिंग इट टू अ थिंग सो दैट इट्स स्पिरिट गोज टू हेवन इमीडिएटली. तो वो क्योंकि हर एक की सोल होती है, राइट. तो वो उसके कान में दुआ पढ़ी जाती थी दैट वी आर डूइंग दिस सैक्रिफाइस इन द नेम ऑफ गॉड, और ये आपका सोल जो है गॉड इमीडिएटली जन्नत में लेके जाए. वो हो जाता था. उसके बाद फिर अपना होता रहता था. ऑफ कोर्स ये एक्ट हम लोग देख नहीं पाते थे बिकॉज बच्चे थे, डर जाते थे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके बाद ये हो जाता था. उसके बाद सारा अपना होता था. फिर बस यही ये बकरीद के दिन होता था मॉर्निंग में.
फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता था और लोगों की कुर्बानी हुई है वहां से हमारे यहाँ आता था एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज इट. एंड ऑफ कोर्स उसके बाद खाना पकना शुरू हो जाता. सेवई एक रात पहले बन जाती है सो दैट उसमें सेंस पूरा पैदा हो जाए सुबह तक के. So all of and that and is it's there. also I it's think I've also just given too much. you basically it's also about sharing, right? You share part of the sacrifice meat with your neighbors, with people, Yes. and things like that. Yes. And it's about Yes, I think absolutely. हर एक के साथ रहता है. So the part of the meat is consumed by the family and also offered to other people also, especially distributed to the poor and the needy. Yes. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कुर्बानी. सो आप बेसिकली उनके घर में पोर्शन वाइज यू आर सेंडिंग इट ताकि उनके घर में भी इक्वल उस पे लेवल पे सेलिब्रेशन हो. बिल्कुल बिल्कुल. and that's the beauty of the whole thing. I think वही है, मतलब it takes me back to the thing that you said about कि physical aspect एक चीज होती है, उसके नीचे जो जज्बा है and that the depth of why we do certain things and how we do certain things, it's all about that. मतलब हम देखने को एक और होती है but उसके पीछे जो इतना बहुत भारी जज्बा होता है. So isn't this also the time that people offer Hajj? Yes, so Hajj is offered before बकरीद के पहले हो जाती है. एक दिन पहले हज हो जाती है because जैसे कि मैंने कहा कि the idea was basically कि अल्लाह की पूरी जो वो है कमांडमेंट्स हैं उनको वो करे. and of course काबा जो है हमारा जिसको मक्का कहते हैं उस that is the मेन हाउस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू अस right. तो क्योंकि हमारे यहाँ कोई आइडल वर्शिप नहीं होती है राइट. तो बेसिकली उसको एज अ सिंबल ऑफ प्लेस मान करके उसके चारों तरफ एक परफॉर्म किया जाता है. रिचुअल्स होते हैं, दुआएं होती हैं, नमाजें होती हैं और वो जो हज है वो वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है. सो दैट इज जस्ट बिफोर बकरीद. And it culminates on the day of Bakrid, right? Yes, absolutely. Okay, so अब अगर हम खाने का टेबल देखें बकरीद वाले दिन, I mean गोश्त के साथ तो कुछ ना कुछ तो बनता ही है, but उसके अलावा what is generally the mood? I mean, of course, it is celebration, it's a lot of rumination, it's a lot of introspection. But खाने की टेबल पर और क्या-क्या हुआ करता था आपके, खासकर बकरीद वाले? हाँ जी, जैसे कि मैंने कहा कि बिकॉज द एक्ट वाज जो एक्ट थी उसके रिजल्ट में ही गॉट अ गिफ्ट of sacrificing a lamb. And so we are celebrating that gift when we talk about it. And celebration can't be done without a great layout on table. Okay. Yes. So when we talk about what happened there and what happens now, a lot of things have changed, but definitely when we talk about the basic food items, then Simai is there definitely. And of course, because this is more to do with spice and all meat and all that stuff, so biryani is there on the table. And of course, whatever else you can put, like हमारे घर में सिवई होती थी, बिरयानी होती थी, कबाब्स होते थे. And उसके साथ साथ जो लोग नहीं नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए we used to have like छोले, we used to have पूरी, we used to have दही बड़े, we used to have जो भी आप रखना चाहें. लेकिन बिरयानी, कबाब, सिवई ये बेसिकली होता ही था क्योंकि आप वेज हो नॉन वेज हो सिवई तो आप तब भी खाएंगे. तो ये लेआउट होता था और जो हम लोग अभी चाहते हैं कि जितना हो सकता है इसमें करें. It's so fabulous. मतलब वो खाना, ईद का खाना तो मतलब हम इंतजार करते हैं कि कब ईद मने और कब हमको कुछ मिले किसी के घर से. हम लोग तो वही इंतजार करते हैं हर वक्त. Because the सवई हम कितना भी कोशिश करें, but that's another thing. त्योहार का जो खाना होता है, the flavor of that particular is preparation is unmatched. I don't think all through the year we can be cooking, but it will never be the same taste. Same. Correct. And यहाँ पर मैं एक बात आपसे ये भी कहूंगी because that is the emotion that goes behind the preparation
on that particular day, I think that brings the flavor. मसाले तो सेम होते हैं, but the emotion, और खाने के साथ स्पेशली कहा जाता है कि अगर वो दिल से बने तो उसका स्वाद ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो तो 100% सच है। There's absolutely no doubt in that. That's the reason why बोलते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना is unparalleled, because every time your mother cooks for you, it's always with so much love. हम लोग तभी लोग वापस जाके हर वक्त माँ के हाथ का खाना की भी बात होती है वो हर वक्त। राइट। तो आपका बताइए, सो सदफ, आप व्हाट वुड यू पिक? एक रेसिपी अगर आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करें, सो व्हाट वुड बी योर पिक ऑफ the day? So as I'm not a very, I'm a sweet person, but I don't have a sweet tooth. So if you talk about my, preferences and what I love, then definitely biryani is something, a go-to food for me, and now biryani is something which has so many different ways of preparation. I think every household has a different way of preparing a biryani. Okay. Now, but because of our roots, because of the where we belong to, where I belong to, Lucknow, Awadhi cuisine. So हमारे यहाँ, the biryani is cooked in a totally different style. Of course, I have been to Hyderabad also, and I've tasted the amazing it's very different. biryani of Hyderabad. बहुत फर्क है अवधी बिरयानी से। डिफरेंट नाउ एंड in fact कितनी वैरायटीज हैं, हैदराबाद में जब मैं गई थी तो इतनी वैरायटीज हैं वहाँ पर ऑफ जस्ट अ सिंपल डिश कॉल्ड बिरयानी। हमारे यहाँ जो लखनऊ साइड के लोग हैं वो इससे रिलेट करेंगे, बहुत ही बेसिक बिरयानी होती है, विच इज दम बिरयानी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दम बिरयानी, उसके भी बहुत वर्जन्स हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट दिल्ली में अलग तरह की दम बिरयानी, हैदराबाद में अलग तरह की दम बिरयानी है। हमारे यहाँ जो होती है यखनी बिरयानी होती है, विच इज बेसिकली where you cook the meat separately and the rice separately, and then you kind of mix both the things, and hence biryani is prepared. So बहुत basic होता है, and डेफिनेटली जो जिस तरह से हम बनाते हैं, जिस तरह से हमारे घर में बनाई जाती थी, उस तरह की बिरयानी मुझे कहीं और मिलती ही नहीं है। मैं दुनिया घूम चुकी हूँ, आई हैव बीन टू सो मेनी कंट्री। तो सवाल ही नहीं उठता। अपने घर की बिरयानी जो है वो तो एकदम। एंड यखनी आई नो इज अ वेरी वेरी माइल्डली फ्लेवर्ड बट अ वेरी ब्यूटीफुली फ्लेवर्ड थिंग, जिसका आई थिंक आप उसका मीट कुक करके उसका जो स्टॉक होता है उसके अंदर चावल पकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल आपने सही कहा। You will, I hope you will be able to give us details of this biryani, of the Yakhni biryani in, in writing, so I can put it in the description for our listeners to be able to enjoy as well. Sadaf के घर की बिरयानी हमको भी मिले। बिल्कुल मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। I would love to do that, and मौका होता तो मैं खुद ही बना करके सबको सर्व करती हूँ, क्योंकि मुझे खाने का और खिलाने का दोनों का बहुत शौक है। वो भी मौका आएगा, आई एम श्योर, लाइक दे से इंशाल्लाह वो भी मौका आएगा किसी न किसी वक्त। आपके हाथ की बनी बिरयानी हम सब खाएंगे। सो इसके साथ अकम्पनीमेंट अगर देखा जाए तो क्या होता है? रायता होता है, या जैसे हैदराबाद में होता है वो मिर्ची का सालन होता है, किस तरह का? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि जैसे कि हर रीजन में यहाँ तो ये है कि हर 100 किलोमीटर पे भाषा भी बदल जाती है, खाने भी बदल जाते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है, इट्स सच अ अमेजिंग कंट्री दैट दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स इट अस सो डाइवर्स एंड so beautiful in this whole world. So basically, as you are saying, the combination also differs accordingly, जैसे आप जहाँ पे रहती हैं। So lot of people ये देखा जाता है because it's a dry dish, है ना, बिरयानी सूखी होती है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, खाते खाते you tend to develop like a थोड़ा सा आपको लगने लगता है that you need something along with it. Yes, we have raita. We have a raita combination with biryani. We have salan also, but salan इतना ज्यादा उस तरफ हमारे नॉर्थ की तरफ नहीं होता है। ये दिल्ली में और हैदराबाद में ज्यादा देखा गया है, सालन हो या कोई भी हो। लेकिन हम लोग बिरयानी को कौरमे के साथ जरूर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। जो लोग दही जैसे उनको नहीं अच्छा लगता है, रायता नहीं पसंद है, तो इवन कौरमे का जो सालन होता है, नाउ सालन is basically what is gravy. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सालन is without meat pieces, ठीक है ना। लेकिन हमारी तरफ कौरमा जो होता है that has meat pieces also. तो वो एक वैसा कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते। जी
वंडरफुल, दैट्स आई मीन मेरे तो मुंह में अभी पानी आ गया, सुबह सुबह ही पानी आ गया मुंह में। ईद मन गई हमारे। आइए आइए मेरे घर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी न किसी दिन मौका लगेगा, उस तरफ ट्रैवल करने का मौका तो होता है, बट कभी जब भी नेक्स्ट टाइम आई एम दैट साइड, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर, आई वार्न यू इन एडवांस, ताकि मुझे कोरमा और साथ में बिरयानी आपके हाथ की बनी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। This has been absolutely wonderful, Sadaf, and I'd like to thank you for taking this time and spending this with my listeners and celebrating Eid हम सबके साथ में। I hope ये पूरा साल आपके लिए अच्छा हो and सबके लिए बहुत ही खुशनुमा हो, because I think we can do with all the good things at this point in time, and wishing all of you, your family and all our listeners बहुत बहुत मुबारक इस ईद की, and hopefully किसी न किसी दिन हमारा ही मुलाकात होगी और हम इकट्ठा बैठ के ईद का खाना जरूर खाएंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टाइम सदफ, इट्स बीन एन एब्सोल्यूट प्लेजर। ठीक है, थैंक यू सो मच पायल, इट वाज सच अ वंडरफुल, आपने यू ट्रैवल्ड मी डाउन द मेमोरी लेन और घर की याद आ गई मुझे, बिल्कुल वही माहौल, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं इस तरह से ईद मनाए हुए। जैसे मैंने कहा, वी आर लिविंग इन अ सिटी वेयर एवरीथिंग इज टोटली डिफरेंट, और जैसा देश वैसा भेष, बट यस डेफिनेटली। और यहाँ मैं एक छोटा सा एक शेर कहना चाहूंगी, अगर आप परमिशन दें तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज सुनाइए। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम्हें जाएं भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ यार तुम्हें मुबारक हो ईद। अरे कितनी खूबसूरत बात कही आपने। इसी बहुत खूबसूरत बात और इसी जज्बे पर मैं आज के रसोई के रहस्य के इस एपिसोड में आप लोग से विदा लेती हूँ। अगले त्योहार की इंतजार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।